you got your boyfriend who's a badminton player of his country to come here, marry you, and then coach the Indian badminton नहीं उल्टा ऑर्डर. पहले बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको रिटायर करवाया, फिर उससे इंडिया के लिए काम कराया, फिर मैंने कहा अच्छा अब सब हो गया है, अब शादी कर सकते हैं. Lovely. Now I sacrificed मेरा single status, guys, for the country, so that India can get a double score. she's your reverse Sania Mirza. That's what you are. I love Sania Mirza, guys. Yeah, who doesn't? Okay, can I ask you, your boyfriend is your husband? Yeah, I also prefer more as boyfriend only, but हाँ. Role play. Trust me, that works better. Is your husband is Caucasian? Am I right? I stopped at half word. But yeah, we met around like say 10-11 years, and then he proposed to me a year after we met. That was very quick. He was Within a year? So yeah, 9 years of engagement. None of us changed our minds, and we still believe that we can stay together for most of our lives. Yeah. That's very good. So you guys have been together for 11 years. What's the craziest thing you've done in this relationship for love? That has been पहली date के लिए across continent or rather cross country जाके पहली date when you don't know the other person at all. That has been the craziest thing I've ever done for anybody. मतलब इतना भाव मैंने life में. You went all the way to Denmark to meet him? No, actually Dubai. He. अरे दुबई तो बैंड्रा के आगे है यार. वो भी बहुत था यार मेरे लिए. You went to Dubai. He also came, ना? Yeah, he came 6 घंटे, मैं गई 2.5-3 घंटे. अच्छा मुझसे तो इतना ही होगा. देख ले अपना. Okay. He proposed to me saying कि I would like to take you out on a date either in Denmark or Dubai, because these are the two places I know very well to plan. What a guy, dude! He refused to come to India. इंडिया से होके गया था यार, उसको इंडिया नहीं पता इतने अच्छे तरीके से पहले. So I said अभी डेनमार्क कौन जाएगा, शेंगेन वीजा, oh my god, पता ही कितनी मुश्किल से लगता है guys. Purpose of visit, एक बंदा है, I don't know him. The guy at the visa office like, madam, Taken picture देखा है आपने कि नहीं? नहीं, I was actually taken से यार, I was like कि यार ये बंदे को क्यों इंटरेस्ट है मेरे में. एक तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस बीइंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी ऑलवेज फील लाइक यार गोरे लोग हो, उनको हमारे में क्यों इंटरेस्ट होगा. वो थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप रहता है यार है टाइम. तो आई वाज लाइक कि इसको मैं क्यों. तो मैं चली तो गई वहाँ पे, एंड देन माय फ्रेंड्स वर लाइक तू ना ध्यान रखियो अपना, वो तेरे को बेच ना देके शेट. I'm not kidding. My friends actually gave me like मेरी फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड का की सिस्टर stays in Dubai, तो उसने उसका नंबर देके भेजा मुझे. अब I don't know ऐसा वो शेख को बेच रहा होगा तो वो आके क्या रोक थोड़ा लेगी डील. बट अच्छा लड़का निकला तो फिर तभी तो 10-11 साल कट गए. अभी भी I'm sure I still want to stay with him. Do you guys go to Dubai as like this is my first place, or you're like नहीं यार अभी भी शेख? No, so that was the first. Now we have a house there. What's the craziest thing you've done in love, Vikrant? Apart from studying for UPSC. यार मेरी लाइफ ना बड़ी ब्लैंड सी है यार. मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट I was dating a girl who was flying for Kingfisher that time. तो बड़े बड़ी टिकट्स मिलते थे हमें. Oh, so this is the movie's name is Crew, right? तो कुछ नहीं, मतलब 6-8 महीने अच्छा खासा रिलेशनशिप चला. बहुत फ्लाइटें ली मैंने फ्री की. क्या? Bro, amazing. फिर वो एयरलाइन बंद हो गई. फिर वो एयरलाइन बंद. It's your fault. Single-handedly took down the finances. So one of my friend, both of us were dating roommates. तो हम दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे. मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी रूममेट वो माय फ्रेंड वाज डेटिंग. हाँ वैसे नहीं है, वैसे नहीं था. इसका इमेजिनेशन रिवेंजर का क्या ऐसा भी होता वो. Honey trapping. नहीं वैसे नहीं था. तो जाके आया मैं, एंड देन पता नहीं क्या हो गया मुझे. आज भी मुझे ताज्जुब होता है सोच के कि व्हाट द वाज आई थिंकिंग. जाके आया, रात को बड़ी याद आई, सुबह उठ के वापस चला गया. Came back to Bombay. What is the first flight? The first flight was to Bangalore. Bangalore. You came I came back from Bangalore to Bombay. Amazing. Then I realized कि नहीं थोड़ी याद आ रही है. फिर अगली बार पैसे देके गया मैं. सच्चा प्यार. फिर उसके 1 महीने बाद ब्रेकअप हो गया. हम गोवा में मिले
और यू नो गोवा यार, मतलब कॉलेज के टाइम पे गोवा, तो वहाँ मिले, माय फ्रेंड एंड आई वर देयर, वो उसकी रूममेट के साथ थी। हमने बोला ठीक है, बैंगलोर देखा नहीं है, फ्री में टिकट मिल जाएगी, थोड़ा डोसा भी खा लेंगे रामेश्वरम का। और हाँ, नए नए शौक थे प्लेन में बैठने के, पापा ने कभी प्लेन में बिठाया नहीं, अमेजिंग, तो गर्लफ्रेंड से सारे शौक पूरे करवाए। अमेजिंग। Gold Sugar digger. daddy. Did you ever tell your dad that आपने दिखाया नहीं तो मैं तो देख रहा हूँ? मैं अपने डैड को अगर कहता तो वो भी कहते कि अगर और एक रूममेट है क्या, वो पक्का बोलते। Sunny, how have you been, man? Where are you in your relationship status, bro? मेरे लाइफ में आजकल दो ही सवाल हो रहे हैं, एक तो व्हाट इज हैपनिंग विद माय रिलेशनशिप, और दूसरा कैन आई आल्सो डू तौबा तौबा स्टेप। Can you? नहीं, Can you? It's not a genetic thing. What the it's hell? not a genetic thing, bro. You enter But, the Kaushal household and uncle and auntie are हाँ, they are also going like, क्या पता रास्ते में कोई पकड़ के पूछ ले, हे आपको आता है क्या? So, but I'm single, yeah. You're single right now. Yeah. So you and Sharvi just good friends. Very good friends. What's the craziest thing you've done in love, Sunny? The craziest thing I've done in love. I don't very, very good friendship. Yeah, that's the craziest thing I've done. नहीं यार, मैंने कॉलेज में गया था एक्चुअली, मैं 17-18 साल का था। मैं बहुत झूठ बोलता था घर पे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, उसका बर्थडे था एंड शी थ्रू अ कॉस्ट्यूम पार्टी एंड शी वांटेड मी टू ड्रेस लाइक अ वैम्पायर। उसके अपने चल रहे थे, आई डोंट नो, वैम्पायर डायरीज चल रहा था कि Twilight. चल रहा था, क्या मालूम। I dated a girl once, and like, cause I'm Sindhi, she asked me to be a werewolf. It was very easy for me. Yeah, I know that. Like, where is the wolf? तो फिर मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे घर पे वो आ रहा था कि यार मम्मी पापा को तो पता नहीं है गर्लफ्रेंड है, रात को पार्टी के लिए कैसे जाऊँ, परमिशन। तो हमने कहा हम स्टडी ग्रुप पे, तो मैंने एक दोस्त को बोला कि ब्रो तू आके बोल दे कि यू नो आंटी हम लोग पढ़ाई करेंगे ये वो। तो वो आ गया और उसने भी मस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस दी, पढ़ाई करेंगे, ओके हो गया। मैं बैग लेके निकला और मैं सीधा गया अंधेरी स्टेशन, और उधर ना वो जो कॉस्ट्यूम देते हैं ना, जैसे मगनलाल तो अंधेरी स्टेशन में था, तो मैं मगनलाल गया और मैंने कहा मुझे वैम्पायर कॉस्ट्यूम चाहिए। तो उसने मुझे वैम्पायर कॉस्ट्यूम दिया, मैंने पेवे किया अपने पॉकेट मनी से बचा के रिसीट, और मैं वहीं से डायरेक्टली चला गया पार्टी करने के लिए वैम्पायर का कॉस्ट्यूम पहन के। ठीक है, फुल ऐसा मेकअप करके थोड़ा वाइट ये, और एकदम मैं आया हूँ रात को घर पे 2-2:30 बजे, और मैंने कहा सेट हो गई लाइफ। मैंने कॉस्ट्यूम निकाला, बैग में डाला एकदम कि किसी को तो क्या ही पता चलेगा। सुबह उठा, मम्मी ने पूछा और कैसा था एकदम कल पढ़ाई वढ़ाई। मैंने कहा हाँ अरे मस्त, क्या पढ़ाई किया, मैंने बोल दिया ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, अच्छा ये वो। मम्मी ने ना सीधा रिसीट लाके टेबल पे रख दी। तो मैंने ये सब प्लानिंग के तहत एक इम्पोर्टेंट प्लानिंग तो भूल ही गया, रिसीट जेब से निकाल लूं क्योंकि मम्मी सुबह उठ के धोने के लिए डालेगी। और वो मम्मी जेब चेक करती है ना हमेशा, तो उन्होंने जेब से देखा मदनलाल पे ये क्या चल रहा है। और फिर पापा ने एक्शन डायरेक्ट कर दिया। कपड़ों के साथ सनी भी धो गया। एक तो इसको तौबा नहीं आता है, ऊपर से इसको वैम्पायर बनना है और खून हमारा चूस रहा है। I thought मेकअप उतारना भूल गया। कहाँ था कल? नहीं देखो यही तो होता है, ये सब प्लानिंग कर चुका था कि मेकअप भी वहीं उतार के आऊंगा, सब कुछ एकदम चेंज ऑफ क्लोथ्स वहीं से सब कुछ करके आऊंगा। रिसीट, इट्स द डिटेल्स गाइस, इट्स ऑलवेज रिमेंबर, इट्स द डिटेल्स। That was so funny, right? If he did not remove the makeup, went to sleep, and the father was like, "vampires सोते नहीं है." भाई उसके बाद तो सच में नींद उड़ गई थी मेरी। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। दिल लगी भी तेरे
What's the craziest thing you've done for love, Shrija? Actually, I don't know crazy है कि नहीं, but वही like वो teenage में I just hit teenage and मैं कराटे classes जाती थी. तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो मैं कराटे classes जाती थी और वहाँ पे एक What belt? येलो नाइस कलर टी-शर्ट येलो जो दूसरा एग्जाम नहीं दिया मैंने, वरना मैं ब्राउन ग्रीन तक पहुंच सकते थे. एनीवे बेसिकली वो तो उधर एक बंदा था ब्राउन बेल्ट, ठीक है? वो मुझे लाइक सही लगता था काफी. Brown is above yellow. yes brown is like one below black Oh, okay. and black is top. Black is top. Got it. Black is गुड So this guy. मतलब क्लास का टॉपर था बेसिकली लाइक हाँ कराटे क्लास का. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? बट बेसिकली आई हैड टू लीव कराटे क्लासेस बिकॉज इट वाज बोरिंग और मेरे बोर्ड्स भी आने वाले थे. बट आई लाइक दिस गाय एंड आई लाइक मीटिंग हिम. सो मैं बट हमारी उतनी दोस्ती वो थी, आई डोंट इवन थिंक ही न्यू माई नेम. तो हम लोग यूजुअली बेसिकली मैं घर पे झूठ बोलकर चले जाते कि मैं ऐसे सूप या वो पानी पूरी खाने जा रही हूँ. एंड आई न्यू व्हाट टाइम ही गेट्स डन, लाइक गेट्स आउट. सो आई वुड टाइम माई दिस थिंग, सो आई पास एग्जैक्टली व्हेन ही इज गेटिंग आउट एंड व्हेन ही इज अरे हाय हाउ कम यू आर हियर. उसकी क्लास के बाहर मैं बोलती थी उसे. So you're like proper stalking at this point. Stalking. स्टॉकिंग कह सकते हैं इसको. आई थिंक यार लड़की करे तो चलता है गाइस. मुझे ऐसा लगता है कि लड़की करे तो ये प्यार होता है. Are there any women here who've done stalking? कोई कर रहा Yeah. है तो बोले या इवन आया कोई है. क्या किया है आपने? So, this is after the breakup. I was obviously not dealing it very good. So, really, I feel it's अच्छा, stalking your ex. That's okay यार. he deserved it. It's okay यार. Yeah. I was heartbroken, yeah. So, I knew what the route he took from his office to uska ghar. So, I knew his calendar, like, very well. वाह. अच्छा, that's not okay. So, then, Was he a yellow belt, brown belt? What? no belt. No belt. Amazing. Yeah, I know. Nangu pungu. Sorry. So that's what he said. So then there was this that route I would usually not go for running and all, but मुझे पता होता था कि 7:30 his office, he'll be going by that route. So मैं मेरे घर से run करते वो route पे 7:30 पहुंचती थी and I would take laps on that same road so that dude. so that I cross. स्टॉकिंग के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रही थी. The therapist is like, hey, stalking is not good. Hey, I got 10,000 steps. Okay. So then once I was crossing the road because lap complete हो गया था and I accidentally came in front of his car only. That would not hit me. His beams, like the headlight वाला beam बहुत ज़्यादा आ रहा था मुँह पे, तो I don't think he recognized me even. But I was like, I just scurried from there so that he does not look at me. What if he was reverse stalking you? Yeah. भाई ये कौन चल रही है यार? इसके पीछे जाता है. वो तो वही है यार. Were you like increasing the game of your jogging outfits? Yeah, like, absolutely. I did that. Yeah. Suddenly like fall. क्या कर रही हो Blow बेटा? drying her hair and walking. And I was like, wow, who's this lady? Wow. Perhaps are like Malaika ma'am आप यहाँ. Sorry. Sorry, Shrija, तू बोल रही थी. नहीं मुझे लगता है इट्स हार्मलेस स्टॉक है. उस स्टॉकिंग का क्या कॉन्सिक्वेंस था? मैं बस उसको बर्थडे पार्टी में बुलाया आपने मैकडॉनल्ड्स में. उसका बस यही एंड हुआ. बट ही केम विद द एंटायर क्लास, लाइक यार 7-8 पीपल. सो आई हैड नॉट एंटिसिपेटेड दैट. मैं 6 लोगों का वो लेकर गई थी पैसे और वो 8 लोग आ गए. कराटे के कपड़े पहन के सब आ गए मैकडॉनल्ड्स पे. दे दो मुझे. Yeah, and they're bloody coming after class, so they're f***ing hungry, dude. So they're just eating everything. मैं सिर्फ पानी पिया उस दिन अपनी बर्थडे पर. वो केक भी नहीं, सेब पूरी लेकर आए मेरे लिए गिफ्ट में. bloody nonsense, At man. least प्याज तो बुझी दे. Me, bracket 27 male, and my girlfriend of 1 year visited Vietnam.
Since the flight from Delhi was mostly empty, an air hostess upgraded us to business. How sweet of Vikrant. और इससे लग रहा था सिर्फ नहीं इसके छोड़नी चाहिए थी तुझे वो अच्छी लड़की थी ब्रेकअप कर दिया तूने It was our first time we both started getting handsy but I suddenly So, remember first time in business class or first time getting Getting handsy? handsy. It's open-ended. A bit of both. इकोनॉमी के अंदर सब अपने हाथ अपनी जेब में रख के घूमते हैं वहीं पे बिजनेस में I've sat in the middle seat and gotten handsy. Yeah. But I suddenly remembered I hadn't shaved downstairs in a while. Wow. Werewolf. Can't relate. So I ran to the bathroom and cleaned up. Oh wow. That's impressive. नहीं एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा क्लीनड अप मतलब कि ये रेजर अलाउड नहीं होता मैं ना वही सोच रहा हैंड हूँ बैगेज कैसे? में अरे बट बिजनेस में वो पाउच मिलता है ना. तो उसमें रेजर नहीं होता है होता है भाई उसमें. अरे वो क्रीम लेकर गया होगा ना गाइस क्रीम भी तो होती है Feet भी होता है. वो Feet भी होता है. ऊपर था आप क्या बता भाई Excuse me, sorry. If you really want to, you can pull with your hands also. It's बाय द वे मेरे को एक कंफ्यूजन है, लड़का बोल रहा है लड़की बोल रही है. लड़का बोल रहा है, लड़का बोल रहा है. ओके आगे When I returned my girlfriend was asleep Oh shit! so I started doing time pass Time pass. I love He's feeling the flat surface. चलो अब नीचे एकदम अच्छे से रूमी लग रहा है, अब म्यूजिक सुनते हैं. Meanwhile, Vikrant's ex-girlfriend, air hostess, who upgraded us, got shouted at by her colleague because of the mess I made in the bathroom. So she escorted me back to my economy seats. My girlfriend saw me get insulted, but continued to stay in her seat. Priorities are very clear, I must say. When I expressed disappointment, she said, I thought you were a gentleman. And instead expressed disappointment in me. Is this a red flag? ओह बंदा के बंदी. वो पूछ रहे हैं कि वो बंदी रेड फ्लैग है क्या? Air hostess came and he was like, ये घुंघरू बाल किसके हैं? And she's like, hey, not him. हाँ. Which is that unfair? Come on, business class upgrade free में one person तो should enjoy ना? तो air hostess red flag है. Yeah. इसलिए विक्रांत ने छोड़ा. With you, bro. But like, how did they confirm that ये इसी का है? Like, because they come out and say you can deny कि हमारे पहले कितने लोग पहले गए इधर. आपका भी तो हो सकता है. आप भी तो अंदर गई थी चेक करने के लिए. खाली मेरे था पे ना क्या डाल business, रहे हो? खाली था. But the air hostess also can do naughty go in and Vikrant, you think your ex is that type? नहीं, she figured out because she was hair hostess. Vikrant playing in puns. That's why she left you, bro. Where do we stand on this? Like, is this girl a red flag because she wanted to continue to stay in business class, which she got for free? No. वाह बेटा, यही अगर रोल रिवर्स होते ना, सबके इतने जोर से यस आते ना, यस, he is red. उसको तो छोड़ देना चाहिए. This guy's eyes are red because he just plucked all the hair. Something else also is red, bro. Boys out here, y'all are always ready? Make some noise if you're always ready, boys. भाई ऑलवेज रेडी की बात वियतनाम ट्रिप तो इंसान प्लान ही करके जा रहा है आज रात में तो नहीं सोचा है चल अगले 1 घंटे में फ्लाइट है कि निकलते हैं वियतनाम जाके ग्रुप स्टडीज करेंगे. Exactly. Oh, have you guys traveled business class? I'm sure, of course you have. I've never traveled business class. What's it like? I really never traveled business class. What's it like? Do you get to do handsy with each other? Yes, मैं तो कह रही हूँ अगर वो करना तो इकोनॉमी में बैठना था ना. हाँ, That is actually more economy में like, better chance है handsy होने का. It's more in economy. Economy, yeah. but it's more visible, no? and पर अगर more फ्लाइट visible खाली है है तो क्या economy. फायदा? मतलब तो क्या फर्क पड़ता है? फ्लाइट तो खाली थी ना.
फ्लाइट वो एयर हॉस्टेसेस घूमती रहती है ना. वो तो बिजनेस में भी घूमते हैं। एयर हॉस्टेस घूमती है. एक्सक्यूज मी, ये किसका है? इकोनॉमी में तो वो एक डंडा जो बीच में होता है वो ऐसे उठ जाता है. मतलब आई एम साउंडिंग सो रॉन्ग. नहीं बट प्यार में क्या गलत क्या सही, इट्स ओके तापसी. या क्या वी नो यू बीन देयर, इट्स ओके. अब मैं आगे तुम लोग डेनमार्क टू दुबई टू मुंबई, तुम लोग वी नो. Is hair and privates a big no or a big yes, or it's like whatever? Whatever. Sorry. सब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे I हैं, सब feel के सब. साइंस ने किसी रीजन से हमें बाल वहाँ पे दिए हैं तो प्रोटेक्शन के लिए. आप लोग के पास कॉन्डम्स होते हैं, हमारे पास हमारे प्यूब्स है, तो गो प्यूब्स. तापसी स्कैंडलाइज हो गई है, तापसी कह रही है ये अंडरस्टैंड. ये biology of बुक में डाला है. इन्फेक्शन वगैरह से इट हेल्प्स इट फ्रॉम नॉट एंटरिंग द vulva. सो थैंक यू, आई एम अ बायोमेडिकल स्टूडेंट. मुझे 2-3 शब्द आते हैं. सब अभी यूज कर दूंगी. Yeah. What do you think, Vikrant? यार फुल मार्क्स फॉर एफर्ट तो बनता है यार, मतलब Effort तो डाल. Come on, Taapsee. it ये is आपको 12th स्टैंडर्ड में भी लगा था. मुझे लगता है कि जो लड़की है शी इज पिस्ड बिकॉज लाइक कि भाई तू करके आया है तो साफ तो ढंग से करके आता है. ये तो रेड फ्लैग है ना कि तेरे को धोना नहीं आता क्या? पानी है उधर, सब है, टिश्यू है, अनलिमिटेड सब नहीं, but है. आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है हाँ साथ कि में वो रह के, कि है ये ना? तो हमारे खाना बाथरूम में भी यही नहीं बट करेगा. गाइस हाँ. प्यार में तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना. हाँ? प्यार में साथ देना. हाँ, ये साथ साथ देना साथ दे रहे हैं, मतलब उसको बोलना चाहिए एरोसिस ऐसे रुक, मैं साफ करके आती हूँ. नहीं यार, इट्स लाइक बैठ के समझाओ उसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू नो दैट्स हाउ यू ग्रो. बट मेरा ख्याल यहाँ जा रहा है वो लोग ने वियतनाम में उतर के फिर क्या किया, क्योंकि इतना सब कुछ ड्रामा फ्लाइट में हो गया तो वियतनाम में तो एक ही रूम बुक किया होगा होटल में. Yeah. फिर क्या हुआ? Yeah, it's like it's almost the 4th day and he's like it's growing back. So you want सॉरी बेबी. you want to do something? Tell me now, or let it grow back. Okay. वापसी की फ्लाइट में देखते हैं. I'll be smarter when we are going back. अभी तक हमने जवाब नहीं दिया. क्या? The question was, are you unattracted by hair? Are you unattracted by pubes? Are you okay with it? Are you attracted by pubes? Not attracted like गहराई. यही तो चाहिए. It's Wow. unobjectionable. It's salt and pepper. ये एडिट करते ना माँ बाप देखेंगे. They'll also be like, what the hell? I am 26F and I hate this societal norm that only men should pursue women. Nice, good start. 26F. I simp like crazy. Very self-aware. I have moved cities for men. Hi Taapsee. No, the man moves cities for me, countries for me. Done stupid stunts to impress them. I even watched boring superhero films for this one guy. She's a red flag, guys. Dude, yeah. Yeah, watching superhero films is not a sacrifice. Do you watch superhero films? Me, Hey, best guy. Great. Very nice. Instead of cleaning up like this, Srija with 2 pani puris doing this. No, but he also says, na, wax on, wax off. Wax on. That's the answer to the previous question. Chalo, okay. So continuing. So I watched boring superhero films, है ना, for this one guy. Then they all turn around and tell me that I'm too intense and it's creeping them out. Whoa. My current boyfriend, however, really appreciates everything I do for him. He's very expressive in his love back for me. And I used to think this is all that I've ever wanted. Wow. But when he treats me well, I lose respect for him. Bengal, what's wrong with me? What's wrong with me? Say, correct me if I'm wrong. She's saying that she respects the boys who are rejecting her because she feels like there's still something to chase. Whereas this guy, because he's approved of her, she's like, hey, said तुझे मैं पसंद हूँ. ची. मुझे ही मैं पसंद नहीं हूँ.
so she hates herself basically. Yeah. Yeah, I don't think it's a self-esteem issue, I don't but I know. identify with her, so I want to be little biased. थोड़ा तो होता है What part do you identify? There are 3-4 things that she said which are contradictory. कि bad boys होते हैं ज़्यादा hot, है ना? मतलब when he was in 12th fail, I was like cute है विक्रांत. When Haseen Dilruba was like yeah, this boy, काट अपना हाथ. That's right. हाँ फिल्म का प्रमोशन करेंगे. Okay, wait. So then let's talk about the film. Let's talk about the film for 1 minute. Okay. If after 1 minute they talk, then tell them to shut up. Okay. मैं ही Okay. देख रहा हूँ. The movie is called Fir I Haseen Dilruba. Okay. And you want to talk about it? You guys should take this. तूने तो पिक्चर देखी है, तू बोल रहा What's था. the movie? What's the movie about? Let's hear what the movie is तूने about. पिक्चर देखी है ना? हाँ. तो तू करेगा ना हमारी पब्लिसिटी. I loved it. In the post animation, I'm gonna put Netflix in my eyebrow. No. It would be really nice if you guys spoke about your film. It's the sequel to Haseen Dilruba, Yeah. right? You guys watched Haseen Dilruba on Netflix? Yes. Yeah. So it's continuation from where we left. So in that, I guess if you guys remember, ये on paper मर चुका है. हाथ कट चुका है. हाथ कट चुका है. हाथ है. So अब इसके अंदर हम we are on the run. He's supposed to be dead, but he's actually not dead. I'm trying to lead a weird life where I'm with him, but not really with him on paper. And then तुम पूरी traces. कहानी बता दो. हाँ यार मैं यही सोच रहा हूँ. यार starting बता रही हूँ यार सिर्फ. अच्छा ठीक. Starting बता रही है. Okay Tom Holland. इतने plot है. Spoilers दे देगी. 59th minute पे क्या होता है? And then this character comes in our lives and ये हमें लगता है हमारी लाइफ सिंपल करेगा, but बाकी आप पिक्चर देख लेना. सिम्प कर देता मैं है. सिर्फ कर जाऊँ. बस ये बाकी की पिक्चर देख लेना. 9 अगस्त से सिर्फ नेटफ्लिक्स पर. टू डू. But Sunny, you were great on the movie. I gotta say, I watched the film. You were great on the film. But did you feel like offended कि यार मैं simp तकता हूँ क्या तुम लोग को? Like when you got cast for it, you were like, am I? हाँ, think अच्छा. I'm a simp. Simp नहीं, like. but that's where an actor comes in, right? Oh. नहीं तो मैं भी स्टैंड अप करता ना फिर. Drop it. अब खड़े हो गए तो थोबा सब कर यो दो. क्या है ना? यो क्या है माइक गिरा नहीं सकता आज फ्री में सब आए तो पैसे नहीं है वैसे भी कम. Sunny, can we come back to the question? What is it? Can you remind us the question? Can you remind us? The question is basically she's a 26-year-old हाँ. female and she starts off with saying I hate this societal norm that only men should pursue women. Correct. Fair. Very great. Do you all also hate this societal norm? Three of them. Yeah. हाँ. Not really. That's not about it. ठीक है. I enjoy कि हम that's why मुझे बम्बल पे वो इनिशिएट करना पसंद नहीं है. हम लोग एक चीज तुमको दिया है तुम करो ना. The women in the audience, just make noise if you think that you hate the societal norm that men should pursue women. Make some noise if you think, yeah, men should pursue, but I'm not going to. Okay. Mostly men. ठीक है भाई नहीं करेंगे. नहीं बढ़ती फिर पीढ़ी आ गया हमारी. Sorry. I want to ask one question. Is it true that girls like picking up projects? Yeah, it Yes. happens. Yeah? It happens. So I think like bad boys there is an appeal because like I've mentioned this multiple times before. Women we have that thing कि fix करेंगे, you know. It's just Okay. हम डेंटिंग पेंटिंग का काम ही करते रहेंगे सारी वही. जिंदगी. अच्छा लगता है. What है जो मुझे हमेशा लगता है कि ये बंदा औरों के साथ खराब है बट मेरे साथ अच्छा है. Yeah. ठीक है तो तब आपको पसंद. फिर वो आप पर भी फ्लिप कर जाता है. ये साले मेरे से मत करिए सब. ठीक है तू बाहर किधर और दिखा ये सब जाकर. तब लगता है अभी चल हो गया. This is not uncommon actually. मतलब इसीलिए मैंने project का पूछा था. I know a lot of people. तो uncommon नहीं है. It's ठीक है. not uncommon. It's not uncommon. I know a lot of people Yeah. who love the chase. Yeah. Who love that. Okay. He looked right into my eyes and said, You guys, ये लड़की मेहनत like करना the chase? चाहती है. You guys like the chase? I think that's the most fun part. मैं तो चेज में ही रही हूँ. फिनिश लाइन तक पहुँच ही रही हूँ. तो वो चेज में ही
तो मजा है ना, will Whole change होता जा रहा है, नहीं चीज़ मजा चली जा रही मजा है। उसी में Yeah. that is where your flirting stage and everything lies, you know, where you're chasing each other. But फिर ये क्या होता है कि पकड़े गए तो है नहीं, sorry नहीं खेल रही, ये क्या बात है? और फिर बोल भी रही है, oh shit sorry please tell me what is wrong with me. I feel so since she's self-aware, I feel she knows what she's doing wrong, and she wants to give the respect this guy deserves. Yeah. May I say 1 second? Sorry. say May I say that itself is not the red flag according to me. Yeah. Because she's self-aware. Yes. She's self-aware. Yes. She knows कि problem है. So maybe she can express this to him, and their role play can be that he pretends to be like her ex-boyfriends, and then she's like losing it because respect भी मिल रहा है और attraction भी. And then it's like, whoa. है ना? I get what you're saying. Because he's a it's green bullshit. flag. He's a forest, no? She's saying like he will do He's a it for forest. her. He will learn. He's a forest. The first guy in the first question, he was a forest. Are you a fixer, Vikrant? Have you ever tried to? नहीं नहीं Have you been fixed? मतलब मेरी बीवी तो बोलती है कि यार तुम जो भी हो मेरी वजह से हो, तो Yes. होगा शायद सच। Correct. मतलब वो ये सवाल उसको पूछेंगे तो बोलेगी हाँ, मतलब I fixed him. I fixed it. Okay, so 1 minute. You don't give her the credit. She takes the credit. Is that what you say? I mean, Bro, she'll use this in court. देख रही है, हाँ? वो देखती है सब कुछ तेरे हाँ पता है interviews मुझे, वो देख देख रही है और मुझे घर भी जाना है। अगर नहीं देखेगी, bro नहीं देखेगी तो I'll cut the reel and send it. I don't. यार हाँ कह सकते हैं, I think she did. But मेरे को ये नहीं समझ आता, मतलब why I asked this is because I have a lot of friends around me who are drawn to bad guys and they're like it's a project. तो ये word जो है ना project, क्या मिलता है वो करने से यार? मेरे को ये नहीं समझ में आता। As women, like I think, like today's sexism की वजह से also we have to always do a little extra to impress and prove our talent, right? तो देखो इसमें मैं कितना एक्स्ट्रा बात कर रही हूँ। काटेगा यार। But एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्ट को पता नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट है। हाँ, yeah. correct. वो तो वो सामने वाला ही बताता है, ये बॉस टिकर अपने आप को पागल है क्या? Can I ask, are there boys who like projects? No, I'm sure. भाई हम खुद पे पहले काम कर ले फिर हम किसी और को उठा के। He does. He likes projects. What's the appeal for you? There's the interaction, right? So you're there and you start talking and it's like a normal relationship. Later you find out, okay, there's just more to that, you know. Oh, so because you're in love, you don't see it as a problem. Yeah, until it grows bigger and bigger and then you're like, oh. Can you describe this problem? आपने क्या समझा प्रोजेक्ट, मतलब कि लड़की ऐसा क्या कर रही थी कि ये तो प्रोजेक्ट निकली भाई? मुझे लगता है लड़कों का थ्रेशोल्ड ऑफ प्रोजेक्ट थोड़ा लो रहता है कि अरे यार ये भी अब हमें ही संभालना पड़ेगा, इसके जार भी मैं ही खोलूं बैठकर। Yeah, a lot of times it's just that, you know, you're having a great time with somebody and then, I don't know, I mean, you're not trying to fix them. Okay. You're not trying to fix them, you just let them be. Oh, that's so But sweet. they also don't know if that's how they want to be. So they will say that now you're not trying to, why you're not doing this extra things for me, and then it gets complicated. Bro, you know Okay, how okay. she said that you never know that you're being fixed? That's you, bro. Would you like to take up this project? You're the project, bro. ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे Okay, guys, you should take it. I've spoken enough. Yeah, as you all know, the film is out on Netflix on the 9th of August. We've got Taapsee Pannu, who's very good in the film. Thanks, yeah, Sunny. भाई हंसा क्यों यार तू? And obviously Vikrant, he's fantastic as we all know it. लगता है पैसे पहुंच गए। Huh? लगता है पैसे पहुंच गए तुम्हारे। Yeah. But no, seriously, guys, and we also have Jimmy Shergill, man. He's amazing, you know. So yeah, I mean, if you all love the first part, then this is just crazier. It's twistier, as Taapsee calls it. Yeah, she coined the word for the film, twistier. Oh, amazing. Yeah. मैं दिल्ली से मैं कुछ भी कह सकती हूँ. But guys, thank you so much for loving the first part. First of all, it was, I mean, for people like us who were like craving for all the validation from you guys, it was very, very heartening to see that because of the love that we got. पहले plan नहीं था बनाने का part 2. It's because of the love that we got from the audience. We
I mean, not we, but Kanika Dhillon decided to write another story for part 2. And here we are, 9th of August. So please give us your time. Yes, please. Thank you.